हेलो बैंकर्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो आशा करते हैं आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे। सो गाइज, योर CAIB जून 2025 एग्जाम रजिस्ट्रेशन इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स। ठीक है, तो कल इवनिंग से आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स इनकी क्वेरीज हैं अराउंड दी इलेक्टिव सब्जेक्ट। ठीक है, तो कौन सा इलेक्टिव सब्जेक्ट आपको ऑप्ट आउट करना है। ठीक है, so my priority is you can go with HRM first, then rural banking, central banking, risk management, and the final one is your IT subject. Okay, so if you do not have any background in IT, then only like don't go for IT things and all. Okay, if you are already have done your graduation and post graduation in IT, then you can opt IT as a elective paper, right? इसके अलावा like if you want to do some sort of certifications in risk management and all, ठीक है, that option or that window is also available with IIBF certifications. ठीक है, तो elective subjects opt out करते समय you have to be very careful, because like if you want to clear this particular examination in first attempt, so like हमारा जो primary goal है that is all about to clearing the CIB examination. ठीक है, so later on we can do certifications in these particular domains also, right? HRM जिसका जो syllabus है वो थोड़ा सा easy पड़ता है, and it is also going to help you in your ABM as well as ABM module B and ABFM module A, right? तो कहीं ना कहीं वहाँ पे भी आपको इसका सपोर्ट मिल जाता है. And then you can go for rural banking as well. Rural banking was bit tough in our previous examination, because there was lots of sections and all, जो आपको काफ़ी ज़्यादा पूछे गए थे. ठीक है, but still it is manageable. Similarly your central banking also. ठीक है, so कल से आपके registration start हो जाएंगे. This time we do not have any early benefits and all, right? So they have removed that particular one. Like you just have to fill the form, ठीक है, and select the city. They'll allocate you centers and timing also. ठीक है, so your like आपका जो सर्टिफिकेशन टाइमिंग, सॉरी, द एग्जामिनेशन टाइमिंग एंड वेन्यू होगा, दैट विल बी पार्ट ऑफ योर एडमिट कार्ड्स विच विल बी रिलीज बाय IIBF अराउंड 10 to 15 days बिफोर द एग्जामिनेशन. ठीक है, तो बढ़िया से आपका सब लोग अपने आप को रजिस्टर कर लीजिए एंड like start preparing from like right now itself. ठीक है, तो धीरे धीरे आपका थोड़ा थोड़ा contribute करते रहें. The good thing about this particular examination this year, you are going to have an entire 1 week for all the 4 compulsory subjects. Especially in case of BFM, we have 10 to 12 days. And the only challenge with your आपका BRBL subject and elective paper, ठीक है, सो जो भी आप इलेक्टिव पेपर आपका लगा रहे हैं, ठीक है, जो भी आप सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, सो स्टार्ट प्रिपेयरिंग फ्रॉम नाउ इटसेल्फ. थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करें उसमें भी, एंड इट शुड बी पार्ट ऑफ योर प्रायोरिटी इटसेल्फ, बिकॉज BRBL एंड आपका जो इलेक्टिव पेपर होगा वो बैक टू बैक होंगे एज पर दी डेट्स इटसेल्फ, राइट? सो डू एनरोल्स, एंड इफ यू नीड एनी हेल्प you can connect me on Telegram, or you can mention into the comment section. All the very best for your preparation, guys, and make a comprehensive study plan, so जिससे आप like you can balance it out like 55 to 60 के score के range के around, ठीक है, and you are able to clear this particular examination in first attempt itself. All right, so all the very best. We'll be having regular sessions. We have already almost done with BFM subject. Now we will be starting with ABM classes. And for remaining subject, we have already classes for BRBL and ABFM. So you can watch those particular session as well. All right. So all the very best. And if you need any help, just feel free to ask. Thank you.